Hi, I'm Aman Wadhwa, and you're watching DNA. Today, I have with me one of the most respected artists in the country, Mr. Pavan Malhotra, who has given us excellent performances over the last 4 decades, from Nukkad, Salim Langade Pe Matro to Jab We Met, Bhag Milkha Bhag, Delhi Six. He has entertained us in the last 40 years. So, hi, sir. Welcome to DNA. हाय नमस्कार. Uh, सर, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगा कि why did you say yes to Court Kacheri? If when you watch it, no actor will say no to it. You know the story. There's so many layers. It talks about you know uh, bar council, the politics there, courtroom dramas, how people handle. With all that, their lawyers, their relationship with cops and cases, and how and at the same time there's a father-son story going on. So there are so Hmm. many layers and so many different kind of scenes as an actor to perform, you know and when you watch it, no actor will say no to this. And then when TVF met me, and they told me that they have produced, I didn't know about this kid, that they have produced Panchayat and Bullock, which I had seen. So I was like, acha, stories sunaiye. I would love to work with you because they make very clean, decent, nice programs. You know, Yeah. there's so many well done. So when they narrated again, are who will lead this? And we were on. Oh, And the team was so good, you know, everybody, the director, and the co-artist, and the whole team, DOPs and art direction, and every each department, I think they excelled. And some of the performances, if you see, everyone, in fact, everyone is so good, The Ashish Verma, I think, is one of the finest actors we have. Then the writer has done such a good job, Puneet Batra. Puneet Batra has written it so well, and he's acted also. Suraj ka character kar rahe. He's okay. so Hmm. good as an actor. Hmm. Everybody else, lawyers, that their union things. All these actors have performed so well. On the set, I really enjoyed it. I really enjoyed it. And so वो trailer देख के भी लगता है the 2 minute trailer is so good. I mean, you want to watch the series, seeing the trailer. And I I hope mean, people like the yeah. series also. I really enjoyed it. My fifth one, I started with Grahan, Tabba, Hmm. Shiksha Hmm. Mandal, Pill, and this. All five are different. The Yes, only thing yes. is, out of five, three I'm playing a Sikh, but they're different. Different stories, Yeah. different characters, Hmm. different body language, Exactly. Yes, different yes. approach. Hmm. सर, आपने जैसे ओटीटी की बात की, अपनी सीरीज की बात की, मतलब आई हैव टू से टब्बर इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एंड क्वाइट अंडररेटेड, आई मस्ट से, इन द इंडियन स्ट्रीमिंग स्पेस. वो भी सोनी लिव के साथ थी. एंड आई मीन सर, आपको क्या लगता है कि ओटीटी में डू यू गेट अ चांस टू एक्सप्लोर योर कैरेक्टर मोर रादर देन इन फिल्म्स? No, it depends. OTT, mein, I know. I mean, if you have 8 episodes, 9 episodes, it's like three films, half films. So हम्म. there are, you can, show lots more. You don't have to compress it. हम्म. But वो अपने आप में एक आर्ट है फिल्म. 2-2.5 घंटे में डिपेंड करता है. Film like भाग मिल्खा भाग is 3 hours हम्म. plus. या. Twice I went to theater and saw it with the audience, and both the times, after 3 hours, people stood up and gave standing ovation. In my experience, both the times in या. theater, you हम्म. know. हम्म. So sometimes 2 hours film is a you get a very complete. Everything is complete. The characters, the हम्म. story. So and sometimes OTT you can go on making seasons. It can be stretched, but people are watching seasons are happy. So it depends. I mean, I think you have to tell a story. Doesn't matter if it's a short story, can really touch you, and 800 pages novel cannot touch you. हम्म. हम्म. या. या. And एग्री. people can. It's possible that a novel doing or film doing very well, but after 20 years nobody remembers it, or 10 years or यस. 5 years. हम्म. हम्म. But there are ट्रू. films, you know, uh, after 30, 40 years, you still think about them, you talk about them. हम्म. Today, I feel very good that people still talk about Nukkad, still talk about Salim Nagre Pe Matro, Bagh Bahadur, हम्म. Black Friday को आज 20 साल से ऊपर हो गए. People talk हाँ about it. जी. Road to हम्म. Sangam 20 साल से ऊपर हो गए. You know, हम्म. uh, Bhag Milka Bhag, after 12 years, they're re-releasing it.
on 18th of Yes. August. Hmm. Hmm. So I think I'm very lucky that I've been part of cinema, which after 20, 30, 40 years, people still appreciate. They want their youngsters to watch those Yeah. films. Hmm. I mean, Guru Dutt films, people still watch. Mother India still watch. You know. Yes, sir. Hmm. Yeah. And sir, जैसे मतलब शो का नाम कोर्ट कचेरी है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके कोर्ट कचेरी के चक्कर लगे हैं? हाँ, मेरा तो ईश्वर की कृपा रही है, मुझे नहीं जाना पड़ा, पर मैं 2 बारी किसी के साथ गया। एक बारी किसी के Oh. एश्योरिटी देने गया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वॉकड इनटू अ कोर्ट रूम। Hmm. आई वाज लिटिल, आई डिडंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। जज हंसा भी क्या, अरे इशारा नहीं करते, नाम लेते हैं, पहली बार आया। Hmm. हाँ। एंड देन दिल्ली में था तो किसी एक फ्रेंड ने बोला कि यार कोर्ट जाना अकेले, तू क्या कर रहा है, चल ना साथ में। Hmm. एंड देन यू गेट टू सी, आप 30,000 में घुसते हैं तो हाँ कैसा जी। क्या है। तो वो इंटरेस्टिंग भी लगता है, डिफरेंट है। देर देर आर पीपल दिल कम रनिंग टू यू इन 3-4 पीपल, इट इज लाइक इन द मार्केट, इधर आओ जी इस दुकान में, इस दुकान में। कुछ लोग अपनी टेबल लगा के बैठे हैं, कुछ लोग अपनी केबिन्स में बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे हम्म। हैं जो ऐसे भीड़ लगा के लगे हुए हैं। फिर एक आदमी सडनली गाड़ी से उतर के आता है तो सब ऐसे जैसे आता है ना बाढ़ का पानी, और वो सब ऐसे हटा देता है सब कुछ। या। सब हट हम्म। जाते हैं, सब उनको हम्म। चाहते हैं एक बार मेरी तरफ देख ले, एवरीबॉडी वांट्स टू विश देम, वो भी है। तो लॉयर्स का आपस में रिलेशन, बार काउंसिल के इलेक्शन, उनकी अपनी पॉलिटिक्स, उनकी अपनी जद्दोजहद केस लेने की, उनका रिलेशनशिप विद कॉप्स, पुलिस के साथ केसेस वो लाए हैं, इनको उसके अगेंस्ट भी जाना है, उसके फेवर में करके खड़ा होना है। और ऑल सॉर्ट्स ऑफ लॉयर्स आर देयर ना। आई मीन ऐसा थोड़ी है या। कि जितने भी लॉयर्स होते हैं बड़ी बेस वॉइस में बड़ा वैसा बात करते हैं। यू नो हम्म। हमारा जो लॉयर 2611 का केस लड़ रहे थे, वैसे तो उनकी बहुत स्ट्रीकी वॉइस है ना, बट इज वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स भी है। अभी तो क्या शायद राज्यसभा के मेंबर हैं। यू नो सो यस सर। कोई बहुत ही बारीक आवाज में बोल सकता है, लेकिन बहुत अच्छा आर्गुमेंट कर सकता है। दे नो व्हेन व्हाट टू से। यू नो सर, जब से कोर्ट कचहरी का ट्रेलर भी आया है, इसके कंपैरिजंस मामला लीगल है से हो रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स पे लास्ट ईयर आया था, वो भी टीवीएफ का शो था। आई नो इसमें फादर सन का रिलेशनशिप भी है, जो उसमें नहीं था। बट मतलब अगर हाउ डू यू सी सच कंपैरिजंस? वो बिकॉज लीगल बात कर रहे हैं तो कोर्ट रूम और उसमें से कुछ चीजें सिमिलर भी हो सकती हैं, ऐसा मैंने तो अ, वो मैंने कुछ एपिसोड देखे, बहुत अच्छा था। आई थिंक रवि किशन वॉज वेरी वेरी गुड। या। जो मैंने दो हम्म। तीन एपिसोड्स में देख पाया, हम्म। उससे ज्यादा नहीं देख पाया। एंड बाकी भी मैंने दूसरी जगह भी देखे लीगल वाले, बहुत अच्छे हैं। पर इसकी अपनी एक जगह है, इसकी अपनी एक जिस तरह से किया गया है, और जो उस तरह से इसमें जो लेयर्स हैं रिलेशनशिप्स की। समबडी ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स। एक आदमी जिसको लगता है यार मेरा बाप जो काम करता है ना ये लॉयर का, ये दे एक्सप्लॉइट पीपल यार, किसी की मजबूरी का हम्म। फायदा उठा रहे हैं, है ना। एंड देन आई अगेन से छोटा सा डायलॉग, सर हमारे गांव में तो जो सबकी मदद करता है उसको वकील साहब भी कहते हैं। तो दैट साइड ऑल्सो ही सीज कि अच्छा ये भी कर सकते हो आप। यू नो या मेडिटेशन मीडिएशन भी करवा रहे हैं तो वहां बैठ के आपको देखिए ये मिलेगा, नहीं तो आप इतना लंबा चलेंगे, इतना होगा, ये होगा, विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। जबकि इनका तो ब्रेड एंड बटर है ना यार। और हाँ एट द जी। सेम टाइम देर आर पीपल वो कम कमा लेंगे लेकिन अपनी जगह रखेंगे। देयर इज एन इंजीनियर, ही इज मेकिंग अ ब्रिज, वो अपने पैसे लेके चला गया, 2 साल में गिर जाए। बट हम्म। देयर आर इंजीनियर्स, दे आर नॉट गोइंग टू बी coming to this country, or they're not going to be coming back here. But after creating, they look at their stuff. So when you take pride in your work, when you enjoy your work, like I always say, I'm so thankful to God that something which started as a hobby, my theater acting, became my profession. And I'm still या। enjoying it after 40-50 years of this. हम्म। You know? या। एंड पवन सर, आपको लास्ट ईयर आपका सेकंड नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, एंड रिसेंटली भी नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस हुए हैं 2023 के। बट मेनी पीपल आर क्वेश्चनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ दीज अवार्ड्स, लाइक कि मास ओरिएंटेड फिल्म्स को अवार्ड दिए जा रहे हैं, बल्कि 80s एंड 90s में थोड़ी जो अलग तरह की मूवीज थी उन्हें उन्हें अप्रिशिएट किया जाता था, सो दैट दे गेट मोर रिकॉग्निशन। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में?
नहीं नहीं, अलग तरह की मूवीज को इसलिए रिकग्नाइज अवार्ड दिया जा रहा था सो दैट दे गेट रिकग्नाइज, ऐसा तो गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, या जो हम्म, भी जूरीज होती थी, यू नो, जो जूरी को पसंद आया, यू नो, उसमें आप रीजनल फिल्म ही होती थी, उसमें एक कमर्शियली हिट ऑलवेज एक अवार्ड रहा है। इनफैक्ट हम्म, दादा साहब फाल्के अवार्ड तो ज्यादातर सो कॉल्ड मसाला फिल्म वालों को मिले हैं, या जिन्होंने बहुत उन्हीं उसी जिसको आप कमर्शियल फिल्म मसाला फिल्म होते हो उसी जॉनर में जिन्होंने बहुत बहुत अच्छी चीजें, मनोज कुमार साहब की फिल्में अगर आप देखेंगे या गुरुदत्त की फिल्में देखेंगे, कमर्शियल तो हर एक फिल्म है जिसमें पैसे हाँ लगे जी, वो पैसे हाँ जी, वापस आ रहे, यू नो। मतलब सर पहले थोड़ा यू कैन रीजनल से मूवीज को रियलिस्टिक, ज्यादा यू कैन से अभी भी रीजनल फिल्म्स को मिलता है। मुझे अभी फौजा, भी मिला, बट अब हाँ जी, फौजा के आपको लिए जिसका हरियाणवी मिला मूवी के लिए मिला था। हरियाणवी फिल्म थी, और हाँ जो जी, मैंने फकीर की थी वो बंगाली डायरेक्टर के साथ जाके की थी, हाँ जी। गौतम हम्म, घोष के साथ, यू नो। हम्म, सलीम नगला बाग बहादुर को बेस्ट फिल्म मिला था। यस। और हम्म, अगर अभी 12वीं फेल को अवार्ड्स मिल रहे हैं उस एक्टर को, तो क्यों नहीं भाई, इट डिजर्व इट ना। और दूसरी हम्म, चीज, कोई भी सिनेमा नहीं हो सकता कि 100% लोग बोले, हर बार होता है ऑस्कर में ये क्यों भेजा, उसको ये भेजना चाहिए, हर एक को लगता है मेरा जो, मुझे जो फिल्म अच्छी लगी है ना, बहुत बड़ी हिट फिल्म्स होती हैं जो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे नहीं अच्छी लगी हमें, बहुत सारे लोग उन्होंने 10 बार देखी होती है। बहुत सारी हम्म, फिल्में कुछ लोग को 20 साल 30 साल के बाद भी याद होती है। कुछ लोग कहते हैं अरे हम ऐसा सिनेमा नहीं देखते, यू नो। हम्म, कुछ लोग, हमें तो लगता है हम रोकर भी बाहर निकले, तो वो अपने आप में वो टच करता है, वो बहुत बढ़िया फिल्म थी जिसने हमें रुला दिया। फिल्म ऋषिदा की फिल्में कितनी सिंपली रुला देती थी, आपको हंसाती थी भी, जाने भी हाँ वाली जी, फिल्म तो आपको टिकल भी करती थी, स्लैप भी करती थी, हम्म, है ना। तो और सिनेमा भाई, आप अगर शॉर्ट स्टोरीज की बुक लेंगे तो तरह तरह की कहानियां पढ़ना चाहेंगे ना, एक ही तरह की पढ़ना थोड़ी चाहेंगे। वो अलग बात हाँ है कि जी देर सर। आर सम डायरेक्टर्स जो एक ही सब्जेक्ट को 10 बारी इधर उधर घुमा के सक्सेसफुली फिर से आपको एंगेज करके फिल्म बना सकते हैं, है हम्म, ना। और फिल्म मेकिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। somebody, for example, डर, the clock is set like that you want him to be successful troubling that girl, you want him to be successful when he stabs the guy. I was in theater, people clapped. हम्म, सो ये स्क्रीन प्ले, सिनेमा, शूटिंग, एक्टिंग, उस सब का एक कॉम्बिनेशन ऐसी ताकत है कि ऑडियंस आर रेडी टू गो विद हिम, इन रियल लाइफ दे वोंट। या सो सिनेमा हम्म, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वेरी इंटरेस्टिंग। और एंड आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिनेमा। मैंने तो जुड़वा भी किया है, डॉन भी किया है, टब्बर भी किया हाँ जी, हम्म, है ना। मैं तो हर तरह की फिल्म का हिस्सा रहा हूँ, उन फिल्मों का थोड़ा कि भाई ये भी एक थोड़ा सा चखा जाए कि हम्म, कैसा है। But I will say yes to what I enjoy doing. Now, I like drama, I like emotional stories, I like realistic things. यस I सर। like to play different characters. Every time the body language is different, your speech is different, your expressions are different, you know. So this hard work goes into it. And but that's why I'm here, you know, हम्म, to do my job with my 100%. And 100% is nothing in this profession. You're talking about या human emotion. You can't say this is how it is. You know, like I just said, same lawyer can, with the same client, two different lawyers can handle that case differently. हम्म, या You know? Some people can have this agenda, usko delay karte jaye, paise kamate jaye. Some people feel, you know, I have to win this, you know, and that's हम्म, their record. I know a very young lawyer, 34, 35 years old. उसने अभी तक एज एन असिस्टेंट से लेकर और नाउ ही इज रनिंग हिज own company, 100% record है, and very proudly he says अभी तक 100%. Some people can हम्म, say I've made so much money by, you know, stretching the case for 20 years. Each to their own. या एंड सर फाइनली आई वांट टू नो कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं आफ्टर कोर्ट कचहरी। After Court Kacheri, there's one film which I've shot with Amit Roy. Oh my God, 2K writer director, Road to हाँ Sanam जी, के writer director, one of the हम्म, most brilliant directors we have. You know, या इतना टाइम तो लगा उसको पता नहीं, पर वो we have shot. I think in another 2.5, 3 months they'll be able to release the film, hopefully. And there's one film I'm going to start shooting next month. There's another one in November. So there are things lined up. But I always feel once the thing is ready there in the market to release, then we should talk about it. You know? या
Hmm. So, sir, thank you so much for talking to me, and it was my pleasure to talk to you, one of my favorite actors. Sir, and all the best for Court Kacheri and all your upcoming projects. Thank you so much. Thank you so much. Jai, Hind. You take care of.